Good evening, sir. Now, am I visible, sir? Yeah, they're visible. And Good evening, sir. गुड इवनिंग। आपका हिंदी में है ना? सर, सर, ठीक है। हिंदी में है। ठीक है, ठीक है। तो आपने गुड इवनिंग बोला ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो कैसे हैं रवि जी सॉरी, आप? नहीं नहीं, कोई नहीं। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, सर। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कुछ सर, ब्रीफ मेरा में? नाम रवि राज है। सर, सर, मेरा नाम रवि राज है। मैं बिहार जी। के नवादा का रहने वाला हूँ। मैंने 2020 में सीताराम साहू कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर के साथ किया था। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने लगा, जिसमें पहले 69th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ। और फिर 2020-24 के यूपीएससी सीएसई के रिजल्ट के बेस पे मेरा सिलेक्शन आईआरएस इनकम टैक्स के पोस्ट पे हुआ। और शेर सुनना मेरी हॉबी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप रेवेन्यू ऑफिसर पे कितने दिनों तक काम किया आपने? सॉरी सर, मैं वहां ज्वाइन नहीं कर पाया था। मैंने अच्छा। एक्सटेंशन ले लिया था और मीन वाइल मेरा सिलेक्शन यूपीएससी सीएसई में हो गया। तो अभी भी आप रेवेन्यू से रिलेटेड सर्विसेज में ही हैं, तो योर फील्ड रिमेन्स द सेम। सर, इसमें जो हमारी, आपको क्या लगता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि हमको इनकम टैक्स टोटली खत्म कर देना चाहिए। ये अच्छा तरीका नहीं है टैक्सेशन का। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स चूंकि सरकार के इनकम का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। और इनफैक्ट जो भी टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास आती है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स है, सर। तो इसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि सरकार को बहुत सारा वेलफेयर स्कीम्स चलाने होते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करने होते हैं, देश की सुरक्षा करनी होती है, देन माइक्रो इकोनॉमी के स्टेबिलिटी को बनाए रखना होता है, और इवेंट इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए भी इनकम टैक्स एक अच्छा नहीं, इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैक्सेशन को कम किया जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उसमें आप वैरायटी ला सकते हैं, और उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। तो वो कलेक्शन उतनी करें, लेकिन उसके तरीका बदल जाए। बिकॉज यू आर डिस इंसेंटिवाइजिंग हार्ड वर्क। जब आप उनकी डायरेक्ट इनकम को टैक्स करते हैं ना, तो उसको डिस इंसेंटिवाइज कर रहे हैं आप। इनडायरेक्ट टैक्स में उस तरह से पता नहीं लगता है। सर, अगर कोई बेहतर विधा हो सकता है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, पर मुझे लगता है सर कि ये बहुत व्यवहारिक नहीं होगा। और फिर अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें और अपने रेवेन्यू को यथा स्थिति बनाए रखना है, उसकी मात्रा को उचित बनाए रखना है, तो सर इसके कारण जो अपेक्षाकृत कमजोर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, उन पर भी सर कर का बोझ, टैक्स का बोझ बढ़ेगा। तो सर इससे देश की इकोनॉमिक, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड पे सर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मुझे लगता है सर इनकम टैक्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टैक्सेशन को एक बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। तो इस कारण से एक सर मुझे लगता है एक इसको बनाए रखना। इसमें ना एक टर्म्स हैं। पहले हमारे एक टर्म हम सेल टैक्स यूज करते थे, फिर हमने उसको वैट बोला, फिर हमने जीएसटी बोला। ये क्या, हम टैक्स बदलते ही जा रहे हैं ओवर द इयर्स? क्या है इसमें, अंतर क्या है? सर, कोई भी देश या कोई भी अर्थव्यवस्था लगातार इवॉल्व करते रहती है और समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसी कारण सर हम परिवर्तित टैक्सेशन में भी परिवर्तन करते हैं। सर, जीएसटी को वस्तुतः ऑलमोस्ट 17 अलग अलग टैक्सेस को मिला करके बनाया गया है। तो एज अ रिजल्ट सर, जीएसटी जो है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस का सिंप्लीफिकेशन है। तो इस कारण से सर पहले जो वैट था या हम्म। सेल्स टैक्स थे या दूसरे टैक्सेस थे, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की गई है। तो जीएसटी वैट नहीं है क्या? सर, जीएसटी में जीएसटी को सर, अगर मैं समझ पाता हूँ तो एग्जैक्टली वैट नहीं है। इनफैक्ट ये कई अलग अलग टैक्सेस को मिला करके बनाया गया है। बट हाँ,
जो एक इम्पॉर्टेंट रूल था वैट का, वो यहाँ भी जीएसटी में भी देखने को मिलता है। क्या क्या था इम्पोर्टेंट जो फीचर था जी वैट का, वो जो आपको जीएसटी में दिखता है वो क्या है? सर चूंकि वैट में जब किसी भी गुड्स का या किसी चीज के वैल्यू को हम उसके महत्व में थोड़ा सा संवर्धन करते थे, उसकी गुणवत्ता में निखार लाते थे, तो उस पे टैक्स लगाया जाता था। सर यहाँ भी जीएसटी में ये देखने को मिलता है इनपुट क्रेडिट के रूप में या इसके दूसरे स्ट्रक्चर के रूप में। हम्म। आप नवादा से हैं। सर मुझे दो विशेषताएं बताएं नवादा की, जो मतलब अगर किसी को नवादा के बारे में जानने की उत्सुकता है तो दो ऐसी क्या विशेषताएं हो सकती है उस डिस्ट्रिक्ट की? सर सबसे बड़ी अगर मैं देखूं सर, तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से एक ये महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक रूप से नवादा का जो जैन मंदिर है, वहाँ अ, गौतम स्वामी जी का कैवल्य ठीक है, स्थल एक, है। हाँ, जैन मंदिर है, और दूसरा? सर नवादा में कादिरगंज का जो हैंडलूम सिल्क है, वो नवादा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, पर इसको ठीक है। आज के समय में पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है। ठीक है। धन्यवाद रवि जी। सा, मैं श्रीकांत जी को कर सा, इतना शोर कर। श्रीकांत जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको जी। हम्म। हाँ रवि जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या पॉलिटिकल साइंस थियरी में, सब्जेक्ट में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी करके आता है। यस सर। हाँ, क्या इसका बताता है इसको? अ, सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में सॉरी, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अपनी मान्यता दी है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो रूसो का है, जिसमें ये बताया गया है कि स्टेट का फॉर्मेशन एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हुआ है, जिसमें वो आम जनता को के जनरल विल की बात करते हैं, और वो मानते हैं कि जो संप्रभु होता है या जो शासक होता है, वो आम जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, और वो उनके कल्याण हेतु प्रतिबद्ध होता है। बदले में आम जनता को शासक की कुछ मान्यताएं माननी होती है। क्लाइमेट चेंज हम सुनते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज, और सर क्या चीज़ है, और बिहार के इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? सर क्लाइमेट चेंज सामान्यतः एक भौगोलिक क्षेत्र का, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का एक लंबे समय के लंबे कालावधि में जो उसका वायुमंडलीय वातावरण होता है या स्थिति होता है, उसका एवरेज होता है, और ये लंबे समय तक स्थिर बना होता है। लेकिन विगत वर्षों में या दशकों में देखा जा रहा है कि उस स्थिति में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तो इसी परिदृश्य को सर क्लाइमेट चेंज के रूप में हम जानते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बड़ा आउटकम के रूप में या उत्पाद के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें सर, तो बिहार बेसिकली कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें 68% आबादी कृषि पर निर्भर है। किंतु जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है सर, तो इसके कारण एक तरफ बिहार के लगभग 28 जिलों में बहुत ज्यादा बाढ़ की समस्या को देखना पड़ रहा है। बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। वहीं बिहार के लगभग 7 से 8 जिलों में सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इससे सर बिहार की कृषि बहुत ज्यादा दुष्प्रभावित हो रही है, और विशेष करके जो धान की खेती है या जो खरीफ की फसल है, वो लगातार विगत 5-7 वर्षों में दुष्प्रभावित प्रतीत हो रही है। ओके। एक रिसेंट विंटर सेशन में एक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल इंट्रोड्यूस किया गया। बिल सॉरी सर, मैं विंटर सुन सेशन नहीं में, पाया। विंटर सर सेशन में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल इंट्रोड्यूस किया गया। सर उसका क्या, हाँ, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सर इसका बेसिकली 3 से 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो कॉम्प्लेक्सेस थे, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था, उसको सर सिंप्लीफाई कर दिया गया है। फिर सर वो अपने आप में टैक्स एक्ट 1961 का बहुत बड़ा था, इसको भी सर उसमें वर्ड्स के लिमिट को लगभग आधा कर दिया गया है।
एट द सेम टाइम इफेक्टिवली इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जहां 819 सेक्शंस थे, वहीं इसमें घटा करके 536 कर दिया गया है। तो सर इससे कंप्लायंस को इम्प्रूव करने की कोशिशें की गई है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले, एट द सेम टाइम लोगों की ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिले। ओके। अब सिमिलरली एक लेबर कोड को, चार लेबर कोड को बना दिया, लेबर लॉज वगैरह कंबाइन करके। इसमें क्या लेबर को क्या इसका बेनिफिट मिलेगा इसको? सर अगेन सर ये पहले के 29 अलग अलग श्रम कानूनों को कोडिफाई किया गया है 4 श्रम संहिताओं में। इससे सर चीजें तो अपेक्षाकृत आसान हो जाएंगी। इससे जो जटिलताएं थी श्रम कानूनों में, उसमें उससे सर काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगा। एट द सेम टाइम अगेन सर इससे अनुपालन स्थिति आसान होगी, अनुपालन बोझ में कमी आएगी, और इन सब का परिणाम ये होगा कि हमारे देश में निवेश को। इसके साथ साथ सर इन संशयिताओं के माध्यम से जहां एक तरफ नियोक्ताओं के अधिकार को, नियोक्ताओं की स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे देश के एम्प्लॉयज हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी भी स्थिति और उनके अधिकार को सर मजबूत करने का प्रयास किया गया है। तो ओके, ये सर बताइए बताइए, कंप्लीट करें। तो सर ये कुल मिलाकर के राज्य, श्रमिक और नियोक्ता तीनों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाने की कोशिश है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। Yeah. Hi, Ravi. गुड इवनिंग मैम। Yeah. I'll keep my questions in English, okay? But you can answer in यस मैम। Hindi. Okay. यस मैम। थैंक यू मैम। Yeah. Um, See, we have GST Council, right? यस मैम। Do you think that whether the GST Council is representing consensus-based federalism or majoritarian decision making? Ma'am, so far it has been observed that GST Council has taken its decision on the basis of unanimous approach. But yes, the provision in GST Act shows that the decision can be taken on the basis of majority. But overall, I think, ma'am, it's neither based on completely unanimous approach or majoritarian. It's rather a cooperative federalism, and this is what this GST Council is doing. Okay. Um, there is a recent phenomenon in social media known as zero post. Are you aware of it? Sorry, ma'am, I'm not Okay, aware of it. I will explain it to you that nowadays the users of social media like Instagram, Facebook, they are not posting anything, and absolutely there is zero. Why is this happening so? Sorry, ma'am, I could not understand its explanation. Okay, okay, I'll move on to the next question. Now India is buying Russian oil, right? Yes, ma'am. Yes. And it is also seen that India is funding the war in another way. Yes. Now, India is giving its own explanations like nation's interest and so on and so forth. However, do you think that India is now an opportunist that we wanted to take all the benefits right now when the Russia is at war with Ukraine? Do you see it in that manner? No, ma'am. I feel that India has its own interest and India is trying to safeguard its interest. As we know, Russia has been our evergreen friend, as our Prime Minister has kept saying this thing. So, as an evergreen friend, we need to uh, keep our friendship with that as well. And if we talk about that India has been funding the Ukraine war, then it's not completely correct, because our Prime Minister and Foreign Minister have kept saying that this era is not the era of war. It means India is also trying to uh, sure, to mediate, or to India also want to end this war. And if we talk that just India is funding, then it's not also a fact. It is because UAsia has also been purchasing nuclear fuel from Russia. Similarly, a number of countries of Europe has been purchasing natural gas and crude oil uh,
from either Russia directly or indirectly. So, ma'am, it's just I think that uh, pressure that has been tried to exert on India by Western countries. Okay. Okay. Now, can a tax system be considered just if consumption is taxed uniformly, but income is highly unequal? Yes, ma'am. Can a tax system be just then? Ma'am, it is often said that taxation is a little complex thing that needs to that needs to be understood in a broader picture. No doubt the income tax, if we talk about, then it seems to be unjust because some person earning more than 24 lakh are paying just 30 uh, percent of 30% tax of it's their income. But again, a person earning more than 24 crore paying tax more than the same. But ma'am, this is the way it has to be done. As a practical approach, it is very important. No, is this tax system just or not? Yes, ma'am. I feel that it is just. It is just. Okay. Yes. You mentioned your in your extracurricular activities, listening shares. Yes, ma'am. What is meant by that? What is it? Ma'am, shays are couplets of couple of two lines that mostly has Radif and Kafia. Radif is the rhyming words, ma'am, and Kafia is the repetitions. Uh, both of the line follow each other. So this is a shade, and this shade is often used to put our view or keep our point of view effectively and in an attractive way. Okay. Um, I have one last question for you. There Sure, is a ma'am. quote. There is a quote which says, "Do it Yes, or don't do it, you will regret both." What do you feel from that? yes, ma'am. Ma'am, as I can comprehend just now, that there are certain things in our life or in our journey that if we do, even we regret, and if we don't do, even we regret. It is just because of the probable outcome of that particular work. For example, uh, if we prepare for civil services and get selected, then we may regret the journey that we enjoyed during preparation. But again, the outcome that we find we really enjoy this, but the thing that we lost in our past, we may regret. And similarly, if we do not prepare, then what we could be after the preparation of civil services, rather, be it a civil servant, be it a very good human being, we just regret if we don't do this. So Mm. this may be one of the interpretation, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So, Ravi, your formal interview is over. Thank you, sir. You are already in services, and Sir. so expectation from you will be very high. Yes, sir. You are quite articulate, communicate well, Thank you, sir. and Thank you, sir. high on confidence also. You have been replying very well. Thank So you, you sir. are a good candidate. But we want that you should do much better than this because you have a potential to do much better. What was the Sir, score last time? sir, it was 180. 180 is quite a good score, and you can take it forward also. It's not very Yes, difficult. But what we found was uh, my assessment was that your answers were very long. Sometimes you were not coming to the point and not replying directly. Uh, in case of when I asked direct taxes, indirect taxes issue, you at the end of it you said this is basically to bring the equality. So you yes, want to sir. streamline that.
So that was the first answer that should have. Same way, regarding the different tax system, okay, it changes. But had you given me, there's a basic difference. Input tax credit, value addition, what you said. Yes, sir. Value addition on what? On input tax credit is given. So a professional will immediately answer this question only. A sale tax was the tax at the last level. Well, VAT Yes, was sir. input tax credit was given. That was continued in GST. Only difference is that you have integrated central excise and different taxes also at the central level. They were integrated into that. That's all. But the value added tax is the principle. The same principle is being followed. That has not been Yes, changed. sir. So Yes. that should have been. You, then every answer I saw that, because labor code, he asked my colleague, you started explaining labor code, how many laws were integrated. No, he's asked what is the why this was done, the reason. That's all. Yes, sir. To answer very in short. And then Yes, sir. say do or do not do it. That was also very clear, kind of. Madam had asked you. There was another question also. So they were very Yes, direct sir. questions and direct answers. So you need to be analytical while replying, and use of logic has to be there. So, but Yes, sir. keep your answers crisp, and that is from my side. Thank you very Yes, much. sir. Over to Thank you, Shrikant. sir. Raviji sir has given a detailed feedback regarding, but you are a good Yes, candidate. sir. If you observe the detailed feedback, I think definitely you will do better. Yeah. Otherwise, you are a good Yes, sir. candidate. Yeah, you will do better this time. Good luck. Thank you. Thank you, Good sir. luck, Ravi. Thank you, sir. Yeah. Ravi, you're good in communicating in English. I thought, okay, I will be just speaking in English, you'll be answering in Hindi, but you speak very well in English. Thank you. Yeah, that is one thing. And the way you Thank you, communicate is ma'am. also good. It is like a normal pace. There is no rush up or anything. It is good. The pace you maintain is also very good. I would say that. With Thank you. regarding the questions, what I wanted to tell is, see, the question I asked you, whether the system is just, and you said, yes, it is a just system. But of course, it will be just unless it is supplemented by a progressive direct taxation and welfare distribution. Yes, Since ma'am. if you are in a service, we expect more, right? Obviously, from Yes, ma'am. taxation and all those questions, we don't want a normal answer, just another candidate answer. From a person, one who is in service, gives an answer in a much more elaborate and in a very comprehensive manner. Correct? With Yes, some ma'am. data, facts, and why it is so. That was missing, I felt. Yes, ma'am. Okay. And regarding the GST Council also, to some extent, it seems like a majoritarianism. Yes, it is true. Because you didn't talk about the voting or the quota that we have, that is 75 is to 75 percentage of the voting should be there, right? But Yes, unless ma'am. the center decides so, you cannot take any decision. That shows the majoritarianism. Yes. Because the central government has the upper hand in the GST Council, no matter what. Yes, It ma'am. seems like you're supporting the government's decision, whatever they take. Yes, it is correct. But at some places, you can be truthful also. There are certain issues that are present that need some reforms. You can say that. That there is no wrong in that. That is what I felt with the way I discussed with you for the questions and answers. Okay, and Yes, ma'am. some brush up your current affairs also. Some datas and Yes, facts ma'am. you can add in your answer rather than just a plain statements. You can add that too. Yes, ma'am. Okay, that's it, Ravi, from my end. You will do well. Okay, all the very best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Ravi. Thank you very much. Uh, All the very best. Sir, I have two, three Yeah, questions. please, please. Sir, last time I was asked, my board was the board of Dinesh Dasa, sir.
And at the end of interview, I was asked that आपको कुछ पूछना है. Sir asked ठीक. me, do you want to ask us? I said, thank you, sir. Sir, what should be my answer, or what should be my reaction on such question? Because one of I was watching. So No, you are talking the real interview. yes, sir, real interview. Okay. You know what happens if they are asking Yes, you sir. this, and this was the right answer. In fact, you wanted to ask something. I don't know which context they asked you. Normally they don't ask, but it was asked otherwise without any context. Then Yes, sir. you replied very well. You are not there to ask board the questions. Yes, sir. That was the right answer, and that explains your marks also to Yes, some sir. In extent. fact, sir, uh, 2 weeks ago, I was watching a podcast of ex-interviewer of UPSC. He, Hmm. sir, said that if I ask someone that we want to ask any question and somebody says no, then I feel that he is very confident candidate. Therefore, sir, I thought that what should be my answer? No, but what? Why should you ask any question from board? You are not there to ask question. I don't know why he thought that way. You are there to reply to their queries. That's what you did. And why should Yes, you sir. ask question from the board? It's like Yes, sir. going to Prime Minister's office or his meeting, and then it is compulsory to ask questions. It's not. Yes, sir. It's not. You are not at equal footing with the board. I don't know Yes, sir. which person has suggested you that you should have asked question. Your role was not that. Our role Okay. is to ask you questions, evaluate on that basis. So I think you did the right thing. That's what I said, that your high marks are because of that. People get tempted to ask something. And if you Yes, ask something, anything, however intelligent it may be, nobody will like it. That is yes, sir. bureaucracy. That is bureaucracy. Yes, You don't want to be asked unnecessarily. Mm, It's a kind of asking the boss. yes, sir. In my view, you did the right thing. बाकी मेरे Thank you, sir. colleagues का क्या, what is their view? Please, you can also chip in. No, it is same, sir, because it is an interview board. You've gone for the interview. The board is supposed to interview you. And that's Sir. the board is supposed to interview. That is the end of it. During a question, something is there, that is different. Yes, sir. Yeah, otherwise there is no. So, but I beg to differ in that area, because I also hear that many panel members say, but the reason panel members with whom I may interact, they say that they want the candidates to ask some questions, like any question that they wanted to ask, because if like whether mainly to test their confidence, or whether they are like shying off from asking question. Likewise, they told. I interacted with few and I got that opinion too. That's why I don't know what to say. Uh, my whatever services years I have put in bureaucracy, Mm, I don't think anybody likes that. okay, sir. Nobody will like. No boss will like. Whether it's in bureaucracy is same, but it's in private or in government. So even you go to Tata consultancy, Mm, Tata bureaucracy is also considered to be a very mature bureaucracy. In fact, people used to compare, mm, still they compare with the Tata services, how they are groom their managers. So there also, this kind of, even while working, you don't like to be questioned everywhere. There are certain things, yes, you can give suggestion, you mm. can suggest something, but then that is when you are asked to on in a special context. But if you ask question, ask some question, we are there. Yes, sir.
So I agree with that has no logic in that. my. Yes, sir, that's correct. Because when they ask like, do you want to ask any questions? That is not like a interview. Rather, while answering questions, they may be having some doubts, or the question panel might pose a different question, and the person may not be knowing the answer. So they are giving an opportunity so that they can learn more from them. Maybe I thought in such a manner. Could be that way. But Ravi, your answer were that way balanced. You were not answering it in a manner where we can say that you were not balanced in your approach. But that is the by and large you have to maintain that in case you want to score. You should I not will look like verify an that. activist or something Hmm. out of the blue. I mean, you may have some thought on equality. On there is a lot of distortions in the society, that there are lot of distortion in our political system, but you are not there to look it in a negative way. The moment you Yes, start looking that way, they will think that you're not thinking is not positive. You have to sir. be optimistic, not the pessimistic person. Yes, sir. There are criminal, there are wrong things, there is corruption, but then we have to come out with some better. So you are okay, but in this question, I think we have confused you more. So you have to take somebody else's opinion. Hello, all the best, Ravi. We Thank you, wish you sir. all the Thank you, best. sir. Thanks a Thank lot, you. sir. Thank you. You. You can log out now. Thank you, ma'am. Thank you.